Hello everyone, very good morning to all of you. So today we are here with differential equation chapter और इसमें हम solving पे हैं variable separable form करेंगे आज हम solve. So now let's start with this. So this is the first question that is given to you. Solve the following differential equation. So what do you have? So you have here dy by dx. तो solving का मतलब क्या होता है? We have to find the equation of curve. Equation of curve निकालना है. तो हमें dy और dx को हटाना है. हमें क्या चाहिए? Y is a function of x. सो नाउ dy बाई डी एक्स को हटाने के लिए एक ही चीज करनी होती है इंटीग्रेशन. यस, वेरी गुड. सो नाउ वी विल सेपरेट द वेरिएबल्स जो है वो किसके लिए. आपके पास हमेशा dy के साथ y का फंक्शन होना चाहिए और dx के साथ x का फंक्शन होना चाहिए बिकॉज यू कैन नॉट इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x और x विथ रिस्पेक्ट टू y. सो नाउ दिस इज हाउ वी राइट इट. सो यहाँ पे कोई y का फंक्शन नहीं है, सो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास. So now let's integrate both the sides, right? So this is what we have. dy का integration y, x square का integration क्या होता है x cube by 3, x का integration क्या होता है x square by 2 और 1 upon x का integration क्या होता है log x plus c. So this is what we have the answer as x cube upon 3 plus x square upon 2 minus log x. So this is what we have when we have for solving of the differential equation. Correct? So this is what we have the question for. Now let's move on to the next. Now here we have dy by dx is equal to x raised to 5 plus x square minus 2 upon x. Now again this is the question which is based on variable separable form. Let's solve this equation now. Again if we integrate it, x raised to 6 upon 6 plus x cubed by 3 and minus 2 log x plus c. So simple वन लाइन आंसर्स हैं, तो ये तो वन मार्कर ही है. यस, बिकॉज इसमें y का फंक्शन ही नहीं है. तो सिंपल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट दैट dy and dx are to be separated and we have to keep in mind that dy should be in numerator and dx should also be in numerator. So this is how it goes on. Now let's move on to the next. अभी देखिए 2x लेफ्ट साइड पे है, x का फंक्शन राइट साइड पे है, तो हम 2x को भी यहाँ पे ले जाते हैं. करेक्ट, सेम साइड पे ले आए. अब हम dx को लेके जाएंगे राइट साइड पे बिकॉज अभी हम पहले फंक्शंस को जो x के सारे फंक्शंस हैं उनको सेम साइड पे रखें. नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. सो y एक्सपोनेंशियल 3x का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल 3x अपॉन 3 माइनस 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. करेक्ट. सो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है सेम वेरिएबल की फंक्शन सेम साइड पे होंगे along with dy and dx in multiplication with them. Clear? Now let's move on. Now this is x plus 2 dy by dx upon x square plus 3x plus 7. चलिए इसमें सेपरेट कर लेते हैं पहले. This will come in upon, yes. Clear? Now we will do the separation. करेक्ट. अब आता है इंटीग्रेशन. ये इतना डायरेक्ट नहीं हो सकता है, तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन होता है. अगर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर वी डिवाइड. सो हियर, सो इट्स अ फुल रिविजन ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो स्टूडेंट. बेसिक इंटीग्रेशन का रिविजन भी है. करेक्ट. सो यू हैव टू बी क्लियर विद इंटीग्रेशन ऑल्सो. दैट्स वाई इट विल गिव यू अ प्रैक्टिस फॉर इंटीग्रेशन ऑल्सो. करेक्ट. नाउ प्लस 1. So this. So what is the format? Quotient plus remainder upon denominator. So how will you write it? X plus 1 plus remainder upon denominator. So this is to be integrated. Correct? और इस साइड पे क्या है हमारे पास dy. So what's the answer? Y. What is the integration of x? X square by 2. What is the integration of 1? X. What is the integration of 1 upon x plus 2? Log of x plus 2. 5 will come as it is. So this is our final answer. So we are going to remove dy by dx. That is what we mean by solving a differential equations. Clear to all?
right? So it's a full revision for integration as well. So it's very, very important for you all. Now the next, dy by dx is log x. Very simple. हम x को डायरेक्ट ले जाते हैं, नो चेंज रिक्वायर्ड, एंड नाउ वी विल इंटीग्रेट. अब log x का इंटीग्रेशन कैसे होता है? बाई पार्ट से होता है. वेरी गुड. सो वी विल assume another function 1. So log x as it is, integral of second function. This is your first function, this is your second function. Derivative of first function. फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है क्या? हाँ, ज़रूरी है. आप लोग बाई पार्ट्स का यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे और वी विल राइट इट हियर एज इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट्स. Okay, because that's the only thing that we are using. Please do mention it. Okay, so y x log x, 1 का integration is x. Now 1 upon x into x. This is important part. आपको दोनों का प्रोडक्ट उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है. And x log x minus x plus c. So what's your y? X log x minus 1 plus c. So this is what we get the final answer is. Now let's move on to the next. इसमें भी x है. अभी तक y का कोई फंक्शन नहीं आया है हमारे पास. So this is just for practice. अभी देखिए dy और dx दोनों हमारे पास न्यूमरेटर में ऑलरेडी है और हम फंक्शन को डायरेक्टली सेपरेट करेंगे. ओके, नाउ रूट ए प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स. करेक्ट. नाउ डी वाई के साथ रूट ए प्लस एक्स है तो उसको भी हमें हटाना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ डू वी गो फॉर इट. करेक्ट. नाउ हाउ डू वी इंटीग्रेट दिस. अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है? सोचिए सोचिए. माइनस तो बाहर ले लीजिए, उसकी टेंशन मत लीजिए. वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए एंड देन वी सेपरेट द फंक्शन बिकॉज ए इज कांस्टेंट. Correct. We will add and subtract it so that we can easily solve it. So what will you get? Y is equal to minus, this will give you root a plus x. Let's separate it into two integrals. Minus minus plus a, 1 upon root a plus x. Now you will apply the power rule for integration simply. Correct. So what's the answer? Y is equal to root a plus x. Matlab power is half. So what will you get? 2 by 3 a plus x raised to 3 by 2. Simply power rule. I mention it here. Was the power rule? X raised to n plus 1 upon n plus 1. This is what we have. So plus a again into 2 by 3 and sorry a. Now here the power is minus half. Minus half plus 1 is half. So what do you get? 2a, and then we get here root a plus x, and that's our final answer. आप चाहें तो रूट ए प्लस एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं एंड देन अगेन री राइट इट, देन ऑल्सो विल गेट द आंसर. Otherwise this is what we get. So we have to separate the variables, that is the function of x with a dx and the function of y with dy. Remember it. Now let's move on to the next. So what do you get here? x log x. ऑलरेडी दोनों फंक्शन x के ही हैं तो चलिए हम इसके साथ dx को ले जाते हैं, क्रॉस कर देते हैं. Now we integrate this. X log x का integration कैसे निकालते हैं students? By parts. Very good. So what will be the first function? What rule do we use? Isolate. Correct. What do we use? Isolate. Now isolate. अभी हमारे पास कौन से फंक्शन है? Algebraic है और एक log है. क्या पोजीशन है? This will be first and this will be second. X as it is, integration of log x minus differentiation of, oh sorry, I counted wrong. Wait. Now this will be taken as first function. Sorry. Okay, this will be taken as second function. Log x as it is, integration of x minus differentiation of log x and integration of x, and दोनों के प्रोडक्ट का भी इंटीग्रेशन. ओके, देखिए log x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x का x स्क्वायर बाई 2, एक x कट हो गया.
Now you get your answer. Log x square by 2 minus x square by 4. Just on doing it. So you get the equation y is equal to fx form. Correct? So this is what we have. It's a full integration based topic. Okay. Now again you have different functions only in x. So dy को हम as it is रखेंगे and then we will move here. आराम से करिए. These are simple questions with full revision. So it's really important to do it. Okay, और एग्जाम में सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन मोस्टली आता है. So why? Now, what is it? How will you solve? Let's take it. Now the degree of the numerator is less than the degree of denominator. तो हम partial fraction use कर सकते हैं, but partial fraction के लिए it's important to factorize the denominator. Okay, so x square x plus 1 x plus 1. So what do you get? This. Now let's do it. X square plus 1 and x plus 1. Correct? Right? This is what we have. Now let's do the partial fraction. So 2x square plus x. चलिए partial fraction कर लेते हैं. So a upon x plus 1. और जब नीचे क्वाड्रेटिक होता है तो ऊपर क्या होता है? लीनियर. दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर यू ऑल. सो a x square plus 1 bx plus c x plus 1. ओके, और यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस एक्स. आई एम नॉट राइटिंग द डिनोमिनेटर्स बिकॉज सेम. हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है अभी. एक वैल्यू जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं वो है x इज इक्वल टू -1. लेट्स पुट इट. सो 2 and -1 विल पुट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट एंड राइट. सो 1 a -1 का स्क्वायर 2, b का वैल्यू हो जाएगा 0, c का भी 0. सो a इज 1/2. करेक्ट. नाउ लेट्स सॉल्व इट बाय कंपेयरिंग. नाउ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ए का एक्स स्क्वायर ए और बी का, तो ए प्लस बी इज एक्स स्क्वायर. किसका कोफिशिएंट कंपेयर किया हमने? ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ 2 माइनस हाफ इज बी. सो व्हाट विल बी बी? 3/2. सी का वैल्यू निकालना है अब हमें. लेट्स कंपेयर एक्स के कोफिशिएंट्स. एक्स 1, बी का कोफिशिएंट और एक सी. Okay, now b plus c is 1. So what is c? 1 minus 3/2 is minus half. So अभी हमारे पास सिंपल फंक्शन बन गया with a b c. So what is it? y is equal to a का वैल्यू हाफ 1 upon x plus 1 dx. b का वैल्यू क्या है? 3/2 x upon x square plus 1. और c का वैल्यू क्या है? माइनस हाफ x square plus 1. Correct? Now let's do the final step. So b is y is half log x plus 1 plus 3/4 log of x square plus 1. Y x 3/4 we will multiply and divide it by 2 so that we can directly substitute. Okay, minus half 1 upon x square plus 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? डायरेक्ट विद द फॉर्मूला tan inverse x. So this is the final answer for solving the differential equations. Correct? So this is what we get. Now let's move on to the next. Now here the important part is this is initial value problem. Initial value problem में C नहीं आता है. We will get a particular solution. Okay, let's see how we do it. So exponential dy by dx is equal to x plus 1. पहले तो ये dy by dx को हटाना है exponential में से. So let's change this function into log. Correct? इंटीग्रेशन करना है इसलिए हम मोड नहीं लगा. So this can be written as exponential dy by dx is equal to x plus 1. So this can be written as dy by dx log of x plus 1. Correct? Now here e is the base for the log. Now let's separate it out. बहुत बेसिक एक्सरसाइज लिया है मैंने क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ में आना चाहिए. And as I just said,
It's important because it enables you to do integration practice as well. Okay, now y0 is 3. What does it mean? This is your GS, that is general solution. Now particular solution के लिए what is the condition given to you? X is 0 and then y is 3. It will help us to find the value of C. So let's find the value of C and using these. So 3 is equal to 1 upon 0 plus 1. So what is C? C is 3 minus 1, that is 2. So what's your particular solution? Particular solution is, again we rewrite everything, but now in place of C we will put 2. This is your final answer. This is what we mean by initial value problem. Okay, so this is what we have. Now let's move on to the next. Now c dash x. Again c dash ka matlab derivative is given to you. Now here the functions are, because related to economic applications. So here again c and x are two functions. Y की जगह c है. Because अब आपको relate करना आना चाहिए कि अगर कोई application आती है तो कैसे करना है हमको. Again the same thing. Correct? So this is c. So 2 का इंटीग्रेशन 2x 0.5 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. अगेन इनिशियल वैल्यू है तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. सो x इज 0, तब c कितना है हमारे पास 100. लेट्स पुट इट 100. x को 0 रखना है तो सब कुछ 0 हो गया, तो c का वैल्यू कितना हो गया 100. सो व्हाट्स योर फाइनल आंसर? c is 2x plus 0.5 x square by 2 plus 100. Correct? So this is what we get. Basically here C gives your fixed cost and your variable cost is with variable. Correct? So this is what we had, the basic question from the basic exercise. It's there in ML Agrawal, it's there in RD Sharma and everything. So very important for you to understand the basics for the solution of differential equations. Right? So if you all have understood it, do like, share, and subscribe and make yourself confident in applied maths. Correct? Yes, students. So let's move on to the next question. Right? So after 10th, we have 11th now. So let's do it. So x को हम मूव कर लेते हैं दूसरी साइड. चलिए पहले लिख लेते हैं. इट बिकम्स लाइक दिस. सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? -1/x. नाउ वी सेपरेट इट आउट. Correct? So y will be what? Minus is out. 1/x का integration is this. Now let's find it. Now this is your general solution. So when x is -1, y is 0. Correct? This is what we get. And we know log 1 is 0. Correct? So let's do it. So y का value 0 है. C का value भी क्या हो जाएगा? 0. Correct? So what do we get the answer as? Final answer is minus log x. Why is this? Clear? This is what we get. So this is initial value problem. And let's move on to the last one. So now here we get dy by dx is equal to 1/x, x square minus 1. Now dy is equal to 1/x, x square minus 1 को हम फिर से split कर लेते हैं so that it will become easy for us. अभी हमें इनको integrate करना है. So why is this? Now by parts use partial fraction use करेंगे. So 1x minus 1, x plus 1 and x. So a upon x, b upon x minus 1 and c upon x plus 1. Correct? तो a के साथ क्या आएगा? x minus 1, x plus 1. I will not write the denominator again because denominator से हमें कोई comparison नहीं करना है. We have to find only from the numerator. और यहाँ पे सिर्फ 1 है. अब हम 3 zeros पुट करेंगे. 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास. एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार हम पुट करेंगे 1 और एक बार हम पुट करेंगे -1 और एक बार हम पुट करेंगे 0. Now let's put 0 first on both sides. So what do you get here? Minus a and c and b 0. So a is -1. What will be b when we put 1? This will become 0. C will also become 0. So b will be what? 2b. So b will be what? 1 by 2. Now again we put -1. So this will remain 1. -1 if I put a will become 0, b will become 0. Only c will be there. So which will be -2 and -1, 2c.
So C is also 1 by 2. Now let's find the final answer. Integral of minus 1 upon x, integral of 1 by 2, 1 upon x minus 1, and the last is also 1 by 2 integral of x plus 1. So what's the final answer? Y is minus log x plus half log x minus 1, half log x plus 1. This is your general solution again. Okay, so you have to find particular solution. So when x is 2, y is 0. Let's put x as 2. So what do you get? 0 is equal to minus log 2 plus 1 minus 1 is 0. Oh, sorry, 2 minus 1 is 0. So this becomes 0. And 2 plus 1 is 3. So what's the answer for C? C is log 2 minus log 3 by half log 3. Correct? Now, let's put this value and get the final answer. So, what will be your final answer? The entire thing, and in place of C, you will get this value. So, that will be your final answer. So, I hope you all have understood the basics for solving the differential equation. So, do like, share, and subscribe. And if you have anything else to come up with, do message me. Okay? Thank you. Thank you, everyone.